इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से क्वेश्चन पेपर देख लो बेटा सभी लोग। क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट है, देखो। दिस वन इज फ्रॉम योर वर्क पावर एंड एनर्जी बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है। ये वेव ऑप्टिक्स है, अनपोलराइज्ड लाइट। Two identical plates are different metals but same area of cross section, coefficient of thermal conductivity। ये हो गया thermal conductivity यानी heat transfer। This is from your heat transfer। ये अपन करेंगे, ये क्वेश्चन भी अपन करेंगे। thermal conductivity का और एक क्वेश्चन आ गया। This is also from your heat transfer। Then this one is from your nuclear physics या physical world बोल सकते हैं। And this is from your errors। ये भी करेंगे अपन। देन 10th वन बाद में करेंगे, 11th वन भी सेमीकंडक्टर्स के बाद में करेंगे, 12th वन इज फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, वो भी बाद में करेंगे। ये इलास्टिसिटी से ये भी करेंगे, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं प्रॉब्लम से। ये होता है बेसिकली फ्रॉम योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, ये बार मैग्नेटिज्म का है। क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम योर एम्पलीट्यूड एसी का है। क्वेश्चन नंबर दिस वन इज फ्रॉम योर अगेन हीट, ये भी कर सकते हैं अपन। दिस इज फ्रॉम योर ऑप्टिक्स, ये देखेंगे अगर हो सकता है तो डायरेक्टली। एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम योर ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 रेडियस, दिस इज फ्रॉम योर EMI। क्वेश्चन नंबर 21 इज रोटेशनल मैकेनिक्स। Question number 22 is from your units and dimensions, ये भी करेंगे अपन। Then question number 23 is from your SHM, ये क्वेश्चन भी करेंगे अपन। Question number 24 is again from kinematics। Question number 25 is from your surface tension, ये भी करेंगे अपन, एक बार ट्राई करेंगे। तो question number 26 is again from electrostatics। 27 is from your current electricity। 28 is from your current electricity। 29 is from your kinematics। 30 is from your which of the particles for identical corners shown in the figure, gravitation का ये भी करेंगे। 31 is from your laws of motion। 32 is from your waves, ये क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिस इज फ्रॉम योर एटम्स, ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 इन न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये भी करेंगे। 35 मैग्नेटिज्म है। 36 में ये क्वेश्चन फ्रॉम योर कोलिजन है। क्वेश्चन नंबर 37 इज फ्रॉम योर वेव ऑप्टिक्स, ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 सेमीकंडक्टर्स है, वो अपन नहीं किया अभी। क्वेश्चन नंबर मेजर फ्रॉम टू डायमीटर इक्वेटर 1 मीटर द रेडियस यूनिट्स ऑफ डायमीटर, ये भी करेंगे। दिस इज फ्रॉम योर अगेन ग्रेविटेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 40 and question number 41 is again from your heat and thermodynamics के chapter से। question number 42 is AC। question number 43 is from circular motion। question number 44 is from your optics। question number 45 is from your current electricity। question number 46 is from your atomic physics, dual nature बोल सकते हैं इसको। this is your dual nature and matter से है। Question number 47 is again from your electrostatics। 48 is from your Bernoulli's theorem, या बोल सकते हैं fluid dynamics। Question number 49 conducting regular shape find magnetic field, ये magnetic effects of current में से है। Question number 50 two particles A and B to get respective and released from mutually gravitation से, ये भी कर सकते हैं। तो ओवरऑली कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं देखो बेटा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 क्वेश्चंस हम लोग ने टिक किया हुआ है। वी नीड टू डू दिस 21 क्वेश्चंस इन योर 40 मिनट्स के सेशन में बेटा।
सो 21 into 4 कितने मार्क्स होते हैं बेटा 84। अपना यही टारगेट है कि एवरी मॉडल पेपर में अपन 80 से लेके 100 मार्क्स का पेपर करें एंड विल ट्राई टू डू ओनली फ्रॉम द चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस करेंगे एंड विल ट्राई टू डू द ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, साउंड वेव्स, एसएचएम, इजंट ये वाले क्वेश्चंस को ही ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। कैन एनीवन ट्राई बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कोई। कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? Anyone? An unpolarized light beam of intensity I is incident on a polarizer and then it passes through an analyzer which has its axis perpendicular to the polarizer. The final intensity of the emergent rays, ये अपना एनालाइजर होता है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ से लाइट इस तरह से पास होती है, ये हो गया मेरे पास एनालाइजर और ये हो गया पोलराइजर, दिस वन इज पोलराइजर। यहाँ से अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट गई बेसिकली, यानी डॉट और क्रॉस, ऐसा डॉट और क्रॉस इस तरह से, isn't it? So unpolarized light is being passed, an unpolarized beam of इसका इंटेंसिटी दे रखा है I is been incident on a polarizer, ये हो गया मेरे पास polarizer, सॉरी ये हो गया polarizer और ये हो जाएगा analyzer and then it passes through the analyzer, ये हो गया analyzer which has its axis perpendicular to the polarizer, यानी इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज बेटा। Okay, the final intensity of the emergent ray will be equal to your how much? इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, मैलस लॉ से I is equals to your I1 whichever is been incident into your cos square theta, यानी I1 क्या हो जाएगा बेटा, ये I है, यहाँ पर जब इंटेंसिटी आ जाएगी ये हो जाएगा I1 that will be equal to your इसका आधा that is I/2, isn't it? So I1 will become for me I/2 into your cos square theta की वैल्यू हो गई 90, isn't it? So this will come out for me how much beta? 0. Very good. Mohammad Ibrahim has given me the answer. The question number 5 का आंसर हो गया 4, तो ऑब्वियसली इसके 4 मार्क्स अपन को पड़ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए बेटा। Two identical plates of different metals but with same area of cross section are joined to form a single plate whose thickness is double the thickness of each plate. If coefficient of thermal conductivity of each plates are 4 and 3 units respectively, then thermal composite conductivity of the composite plate will be equal to how much? बताइए जल्दी से। Two identical metal plates of different metals but of same area of cross section. उन लोगों का area of cross section same है, area of cross section is right now for me same. 13.1 3.43 आ रहा करते, चलो देख लेते हैं जल्दी से। आया किसी को ये? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है बेटा इसकी? इसकी 4 है, इसकी 3 है। थर्मल कंडक्टिविटी 4 and 3 है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उसके 3 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल प्लेट whose thickness is double the thickness of each plate. थिकनेस जो है ना, इट इज डबल द थिकनेस ऑफ योर ईच प्लेट, है ना, लेंथ बढ़ गया है कि नहीं? वेरी गुड, 3.43 इज योर आंसर। आया किसी को? किसी को आया? आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा, फर्स्ट वन का मान के चलो 1/K1 into this one is nothing but of your L divided by your A plus 1 by your K2 into your L divided by your A, ये दोनों मिलके फिर एक प्लेट बन रहे हैं, that must be equal to your 1/K that is K effective into length is double thickness that is 2L, area of cross section will remain for me the same. कुछ कट रहा क्या देखो बेटा, एरिया और एरिया कट गया, so K effective will be equal to your how much बेटा? Area of cross section are joined to form a thickness is double the thickness of the other, sorry, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा देखो कितना आ रहा है बेसिकली
this will become for me thermal conductivity K1. तो इसका है दे रखा है 4, so this one is your 1/4 into your L divided by your A plus इसकी thermal conductivity दे रखा है प्रॉब्लम में 3, so it is 1/3 into your L divided by your A is equals to your, this one is your 2 into your L divided by K into your A. ठीक है ना, कुछ करते हुए दिखाई दे रहा, देखो this L will get cancelled, this A and this A will get cancelled. तो ये हो गया मेरे पास 1/4 plus 1/3 इतना अच्छा ही ना is equals to your 2/K, यानी 2 अगर इधर आ गया तो ये 1/8 plus 1/6 is equals to 1/K. तो K की वैल्यू कितनी आ रही, देखिए K की वैल्यू आ जाएगी, LCM will be equal to 48 divided by this will be 6 plus of your 8. So ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/K की वैल्यू हो गई, so 1/K की वैल्यू हो गई दिस वन, एंड K की वैल्यू बन जाएगी मुझे 48 divided by your 14. तो 41 मतलब ये हो गया 27 and 2 2s are 2 4s are 47, 27 divided by 7 यानी 3.43. वेरी गुड, ये आ गया इसका आंसर, क्लियर है, चलो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लीजिए बेटा. A slab consists of two parallel layers of the copper and brass of same thickness and equal area having the thermal conductivities in the ratio 1:4. If free phase of the brass is at 100 degrees centigrade and that of the copper is at 0 degrees centigrade, the temperature of the interface will be equal to your how much? अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर एक बार. क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया कंडीशन. This one is brass, this one is copper. Mute yourself beta. Please mute yourself. Akif. चलो इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर हो गया जंक्शन का थीटा. A slab of your two parallel layers of the copper and brass of same thickness and equal area of cross section have the thermal conductivities. यानी इसका thermal conductivity 1 है, इसका 4 है. Free faces are at 100 degree centigrade and that of the other is at 0 degree centigrade. The temperature of interface will be equal to how much? Thermal conductivity का फॉर्मूला याद है किसी को? dq by your dt is equals to your K into your A into your temperature difference divided by your L. तो टेम्परेचर डिफरेंस में अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 दैट विल बी इक्वल टू योर, यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2. R मतलब क्या बेटा, L बाय योर Ka, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू योर L डिवाइडेड बाय Ka. ये पूरा मैं R ले रहा हूँ बेसिकली, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय योर R. क्लियर है, इज इट क्लियर? Thermal conductivity is in the ratio of what beta? 1:4. क्लियर है, तो ये कितना बन जाएगा R2 into your 100 minus theta is equals to your R1 into your theta minus 0 is theta. R2 मतलब कितना बेटा, R2 मतलब it is L by your Ka, isn't it? So it is L divided by thermal conductivity K, area of cross section is nothing but for me same, that is A into 100 minus theta is equals to R1 की value L divided by thermal conductivity is 4 into your A into your theta. A gets cancelled, L and L gets cancelled. तो यहाँ पर 4 into your 100 minus of your theta will be equal to your, ये हो जाएगा मेरे पास theta. ठीक है ना, तो 4 into 100 हो गया 400 minus 4 theta is equals to theta. तो 400 हो गया 5 theta. तो theta बन गया मेरे पास 400 divided by 5. 5 8s of 40, so it will be your 80 degree centigrade. Very easy question, 80 degree centigrade. फॉर्मूले इस टाइम पे याद आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बेटा. बाद में अरे आया वो बोलना अलग बात है बेसिकली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा. करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव ओनली फॉर द ऑल रेंजेस.
Gravitational forces are repulsive only. See, gravitational forces are attractive in nature. There is no negative mass, isn't it? There is no negative mass. Electromagnetic force can be attractive or repulsive. Obviously, electromagnetic force may be attractive or repulsive. This is true. Gravitational force are repulsive बोल रहा है, ये wrong है. Nuclear forces attractive only for all ranges. No, this one is repulsive even for the smaller forces. Now, nuclear forces are central force. No, they are not the central forces. Better, nuclear forces are not the central forces. Gravitational force are not repulsive. They are attractive in nature. Nuclear forces are attractive only for all ranges. No, nuclear forces only for some cases it is attractive. In other cases it is your repulsive. ठीक है? So for 8th one के लिए आंसर क्या रहेगा अपना? थर्ड ऑप्शन रहेगा आंसर. चलिए 9th one. A student of class 11 has two iron rods, one of length 4.89 plus or minus 0.01 centimeter, and other of length 7.01 plus or minus 0.02 centimeter. He welded both the rods to form a single rod. If the extra length of the rod increased due to welding material is 0.05 plus or minus 0.01 centimeter, then total length of the rod will be equal to how much? उसने क्या बोला कि ये मेरे पास एक आयरन रॉड है, जिसका लेंथ है, अनदर रॉड का लेंथ है, ये दोनों को वेल्ड किया टू फॉर्म ए सिंगल रॉड. इफ एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज ड्यू टू द वेल्डिंग मटेरियल, इनकी वेल्डिंग कर रहे हैं तो कोई और मेटल भी यूज करते हैं ना, उसके वजह से कितना है 0.05 प्लस और माइनस 0.01 का एक्स्ट्रा आ गया. देन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? देन 9th one you can try it बेटा. सो यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे हैं ना बेटा, सो इट इज योर एडिशन, सो इट इज a प्लस ऑफ योर b. इसका एरर कैसे लिखोगे बेटा? हाउ डू यू राइट द एरर? a प्लस b, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, उसका एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है कि नहीं? तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 3 पार्ट्स है इसमें, नो, L1 प्लस L2 प्लस L3, दैट विल बी इक्वल टू योर फर्स्ट वन वाले देख लीजिए फलन. तो L1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 4.89 plus 7.01 and this one is plus 0.05, ठीक है ना? और इसके एरर्स भी ऐड कर लीजिए बेटा, प्लस और माइनस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01, तो ये ऐड कर लीजिए 7, 8, 9, 10, 11 में आएगा, तो सब कुछ 11 में ही है, तो इट इज 11.95 प्लस और माइनस 0.234 0.04 सेंटीमीटर्स, सो इट इज 11.95 प्लस और माइनस 0.04 सेंटीमीटर्स, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर. कितने जने ने दिया हुआ आंसर इसका? सेकंड ऑप्शन. वेरी गुड. रेहान, अब्दुल मन्नान, वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. 12, 13 कर रहे हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा. What is the depth of a lake at which the density of the water is 1.5% more than at the surface if the compressibility of water is given as 50 into 10 power minus 11? ये क्वेश्चन अपना इलास्टिसिटी चैप्टर का है बेटा. कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. कंप्रेसिबिलिटी मतलब रिप्रेजेंटेड बाय K और C कभी कभी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ योर बल्क मॉडुलस इज नोन एज ऑफ योर कंप्रेसिबिलिटी, है कि नहीं? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक बार. एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू ट्राई टू डू इट आउट बेटा. आप लोग अपनी तरफ से एक बार ट्राई करिए एक बार, उसके बाद अगर नहीं आया तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. किसी को आया 2 किलोमीटर? नहीं होता बेटा, 2 किलोमीटर है, नहीं होता. द आंसर इज 3 किलोमीटर फॉर दिस वन. यू शुड बी गेटिंग 3 किलोमीटर्स. ठीक है, चलो 14th वन देखो. A cylinder contains 5 liters of oxygen at STP. If the cylinder is cooled by 60 Kelvin, what amount of heat will be lost by the gas? 14th one. The cylinder contains कितना बेटा? 5 liters of oxygen. ये एक cylinder है, इसके अंदर 5 liters है, यानी volume is equals to 5 liters of oxygen at STP. If the cylinder is cooled at by 600 Kelvin, यानी टेम्परेचर हो गया
60 Kelvin. What amount of heat will be lost by the gas? Pressure दे रखा है 1 bar, temperature दे रखा है 0 Kelvin, 80 और STP. तो वॉल्यूम यहाँ पर इसका कांस्टेंट रहेगा ना बेटा, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रह गया तो वर्क डन विल बी ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू योर 0. वर्क डन विल बी इक्वल टू योर 0. अगर वर्क डन 0 हो गया तो इफ आई एम अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम द फ्लोर, dq will be equal to your du plus of your dw. dw तो 0 हो गया तो dq will be equal to your du. ठीक है ना, q की वैल्यू कैसे लिखते हैं बेटा अपन? How do you write the value of dq? So I can write here delta q is equals to internal energy is equals to always n into cv into your dt or delta t. Delta लिया ना तो delta t ले लेता हूँ. So n I can write from the ideal gas equation, pv is equals to nr into t. तो n will be equal to pv divided by r into t. यहाँ पर बन जाएगा n के जगह pv divided by r into t. cv will be equal to how much बेटा? r divided by gamma minus 1 into delta theta. ठीक है ना, तो कुछ कट रहा क्या देखो बेटा, या r ये r चले गया, isn't it? And this is your change in temperature, isn't it? तो प्रेशर दे रखा है कितना बेटा? 10 to the power of your 5 atmospheric pressure, STP ले रहा हूँ मैं, into your volume is 5 liters, 5 into 10 to the power of minus 3 divided by this temperature is 273 Kelvin into 1 divided by what type of a gas it is beta? Oxygen. So it is 1.4 is the gamma value minus 1 into temperature difference. What is the temperature difference given for me? Cooled by your 60 Kelvin. यानी ये हो गया 60 Kelvin. So simplify कर लीजिए, that will give me the answer. कितना आ रहा देखिए, किसी को आया? कैलकुलेशन करके बताइए एक बार. सर 13th वन का एक बार करिए ना. अच्छा 13th वन का करूं मैं? फोर्टीन वन का कैलकुलेशन बेटा, जब तक कैलकुलेशन देखो एक बार जरा. आया 14.77.4. ओके आया, किसी और कितने जनों का है बेटा? 274.7. ओके 14.12 विल बी द आंसर. 13th वन आ जाता हूँ बेटा, लास्ट में आके कर लेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड है. 17th वन देख लीजिए बेटा एक बार जल्दी से. कैन एनीवन ट्राई इट बेटा फास्टली? 1 mole of monoatomic ideal gas is being mixed with 3 moles of a diatomic gas. What is the molecular specific heat of the mixture at a constant volume? ये बच्चों को गामा ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला याद होना जरूरी है. आई होप अगर आपने रिमेंबर किया हो तो आप लोग कर लोगे. मोनोएटॉमिक गैस के लिए अपने को CV की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3R/2. And for diatomic gas, this is for your mono, and for your diatomic gas CV की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5R/2. So CV at constant volume will be equal to your, this is your N1 CV1 plus of your N2 CV2 divided by your N1 plus of your N2. So N1 है 1 mole into CV is your 3R/2 plus this one is your 3 into your, this one is your 5R/2. Isn't it? प्रॉब्लम में दे रखा है देखो 1 mole and 3 mole दे रखा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ. देखो यहाँ पर this is given for me 3 moles and this is given for me as of your 1 moles divided by your 1 plus of your 3. तो कितना आ रहा देखिए बेटा? This one is 3R divided by 2 plus 3 5 is 15R divided by 2 divided by 4.
कितना आ रहा है देखिए, how much I'm getting this one? कितना आ रहा, 3r/2 प्लस 15r/2, r/2 बाहर निकालो, 15 16 17 18, 18r डिवाइडेड बाई 2, 2 9s are 2 9s are 18, तो ये हो गया मेरे पास 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9s are यानी 9r डिवाइडेड बाई ये हो गया 4, तो दिस विल बी 9/4, r की वैल्यू मालूम है अपने को 8.31 समथिंग, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल बी गेटिंग 18.7 जॉल पर मोल केल्विन, दिस विल बी द आंसर। 18 पॉइंट है क्या, हाँ 13 ये वाला हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर अपने पास ऑप्टिक्स वगैरह का है, फिर क्वेश्चन नंबर 22, 2.25 आर, वेरी गुड। Then question number 22. Anyone give me the answer button? Match the column 1 with the column 2 for physical quantities with SI units. Angular acceleration. Angular acceleration मतलब alpha. Alpha will be equal to radian per second square. यानी ये must be matching with your R. ये must be matching with your R. ये is matching with R, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर, तो पूरे करने की भी जरूरत नहीं आती, आराम से निकल जाएगा बस। फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसा रहना नहीं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी टाइम देखो, ऐसे वाले टाइम सेव करते हैं अपने। 23rd वन देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 10 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखा है मेरे पास 10 हर्ट्ज। इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन यानी ये दे रखा है मेरे पास 6 सेंटीमीटर्स। Its initial displacement is given as of your, initial displacement is given for me as of your 3 meters right now for me. Okay, yani displacement I'm taking it as of your 3 centimeters. Velocity towards the positive extreme position, then equation for the displacement will be equation how much. So general equation of SHM क्या होता है बेटा, x is equals to a into your sin omega t plus of your phi. एम्पलीट्यूड दे रखा है 0, ये 6 सेंटीमीटर से तो 0.06 मीटर्स बन जाएगा, एंड एम्पलीट्यूड बन गया मेरे पास दिस वन। ओमेगा की वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखोगे, सो इट इज योर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10, दिस इज योर 20 पाई, सो 20 पाई इसके अंदर मेरे पास ये है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 वैसे भी डिस्कार्ड कर सकता हूँ मैं, सॉरी ऑप्शन 1 और ऑप्शन कौन सा 3 डिस्कार्ड कर सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अपने को 20 आ रही है, तो ओमेगा की वैल्यू 20 अपन को सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों में भी सेम लिखा है, तो कुछ नहीं कर सकते अपन, तो उसको और सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 0.03, ठीक है ना, तो ओमेगा की वैल्यू है 0.03 इज योर x, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो गई 0.06 इंटू साइन इंटू योर ओमेगा t प्लस ऑफ योर phi, t इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू दे रखा है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.1, ये 2 में जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू योर साइन ऑफ योर ओमेगा t प्लस ऑफ योर phi. So for what value of the phi it is your half beta, phi is equals to your pi/6, pi/6, go on like this. वेलोसिटी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फाई की वैल्यू भी अपन पॉजिटिव ही लेंगे, pi/6, ठीक है ना, तो वेलोसिटी हो गई pi/6, तो x की वैल्यू हो गई 0.06 इंटू योर साइन 20 पाई t प्लस pi/6 आ जाएगा, pi/6 यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर, वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी कर लेंगे, 10 मिनट ही बचा हुआ है मीटिंग का। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, if A and B are two soap bubbles, okay, A and B are two soap bubbles, bubble A is larger than of your B, okay, ठीक है, ये है और ये B है, if the two tubes are now joined by a narrow tube, okay, ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, then bubble A becomes more larger, bubble B, देखो इसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर ऑफ योर B will be greater than प्रेशर ऑफ योर A, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, P is equals to 40 divided by R, isn't it? So larger bubble will become more larger and smaller bubble will become for me more smaller, क्योंकि प्रेशर इसमें से चले जाएगा, इसमें से गैस,
तो दिस विल बिकम स्टिल स्मॉलर एंड दिस विल बिकम फॉर मी स्टिल लार्जर. सो 25 के लिए क्या आंसर हो गया? बबल ए बिकम्स मोर लार्जर. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस. चलिए, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था ऐसे वाले. क्वेश्चन नंबर 29. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, कोई कर सकता है क्या? जल्दी से बताइए. Four identical masses are kept at the corners of a centroid of an equilateral triangle as shown in figure. Then which particle among the following particle is in equilibrium? देखो 1 2 3 रखा हुआ है, इक्वल मासेस से सेंटर पे भी एक रखा हुआ है. तो अगर मैं इस पे फोर्सेस के बारे में बात करूं, इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा. दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर 4 ऑन योर 1. This is the force exerted by your 4 on your 3. This is the force exerted by your 4 on your 3. So on your 2, ये 2 है ना. इन दोनों के बीच में एंगल 120, इन दोनों के बीच में एंगल 120, इन दोनों के बीच में एंगल 120. तो पूरे इक्विलिब्रियम में रहेंगे ना बेटा. ऑल द पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो देन व्हिच ऑफ द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम मींस 4 विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ऑल ऑफ देम. ठीक है, चलिए ये हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए बेटा. 32 तो डायरेक्टली साउंड वेव का क्वेश्चन है. कंसीडर द ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग एज y is equals to 10 mm sin 2x minus 50 second inverse t. तो ये बेसिक इक्वेशन क्या है, याद है किसी को? y is equals to your a into your sin, ये लिखा हुआ है kx minus omega into t के फॉर्म में. ठीक है ना. तो ओमेगा की जगह क्या है बेटा? ओमेगा की जगह दे रखा है 50. That will be equal to radians per second. Anyhow, k की जगह दे रखा है कितना बेटा? 2. k की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 2. तो इसमें से मेरे को टाइम पीरियड आ जाएगा, isn't it? Time period will be equal to how much? t is equals to 2 pi by omega, that is equals to 2 pi. ओमेगा की वैल्यू रखा हुआ है 50, यानी this one will be pi by 25 seconds, isn't it? The time period and the linear velocity. तो टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई बाई 25. पाई बाई 25 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो थर्ड ऑप्शन सीधा मार के आ सकता हूं मैं, बाकी का करने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली. ठीक है ना, टाइम सेव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेटा. In which of the following transition in hydrogen atom will the wavelength of the emitted photon will be the maximum? अब देखो आप लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर का इंक्रीज है ना बेटा. एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ ऑफ द एमिशन विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E is equals to hc divided by lambda. अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम. तो which of the following transition hydrogen atom will the wavelength of the emitted photon will be the maximum, isn't it? अगर एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट डिक्रीज हो रही है then the wavelength emission will be your increasing. So what answer I can write? n is equals to 5 to n is equals to 4, maximum energy part, first option. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34. The half-life of a radioactive nuclide is 30 hours. What fraction of original activity will remain after 60 hours? आज ही करवाया मैंने क्लास में. एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा? a is equals to a naught exponential to the power of minus lambda into t. तो a by a naught will be equal to your how much for me? a by your a naught will be equal to your exponential to the power of minus lambda into t, isn't it? या अपन ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बेटा. n is equals to n naught 1 by 2 to the power of your n, isn't it? And t is equals to how much for me? n times of your t half. तो n की वैल्यू हो गई t by your t half, ऐसा भी लिखा था मैंने. तो n की जगह ये ले सकता हूँ बेटा. a by your a naught is equals to 1 by 2 to the power of n, and that is equals to 1 by 2. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? t divided by t half डाल दो, हो गई बात. ठीक है ना. तो कितना आ रहा बेसिकली? a by your a naught will be equal to 1 by 2 to the power of half-life of the radioactivity is 30 hours, will be remaining after 60 hours. यानी टाइम दे रखा है 60, हाफ लाइफ दे रखा है 30. 31 32 that is 1 by 2 power 4. 1/4 of the initial activity will be remaining after this one. यानी third option will be the answer. Very good. हाँ 1/6 था, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सब जने. अबू बकर. चलो सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा. A beam of light contains two wavelengths, lambda 1, lambda 2. The beam is used to obtain interference in YDS experiment. The distance between the slits, यानी D दे रखा है मेरे पास 2 mm.
डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट यानी कैपिटल डी दे रखा है मेरे पास 100 सेंटीमीटर्स, वेवलेंथ लैम्बडा 1 दे रखा है 4000 नैनोमीटर्स एंड लैम्बडा 2 is given as of your 6000 nanometers. What is the least distance from the central maxima where the bright band due to both of them coincide यानी ओवरलैप हो रहे हैं. ओवरलैप जब हो रहे हैं बेसिकली तो मैंने आप लोग को बोला था n1 lambda 1 will be equal to n2 lambda 2, isn't it? So this will be equal to how much for me beta? N when one into lambda value is 4000 is equals to n2 into your, this is n1 into this one is your 6000. ये 1000 चले गया. n1 divided by n2 will be equal to your 6 divided by 4 यानी 2 and 3. That means this is your 3 by 2. So minimum value of n is 2 and sorry minimum value of your n1 कितना है बेटा? 3. n2 की value कितनी है? 2. Isn't it? So I can calculate the value of your, what is asking right now, what is the least distance from the central maximum where the bright band will be forming. Bright band के लिए formula delta x must be equal to your n lambda. Delta x is nothing but d into your sin theta is equals to n lambda. Isn't it? याद है? Isn't it? थीटा वेरी स्मॉल रहेगा तो d into tan theta लेंगे, that is equals to n into lambda. ये डायग्राम याद है, ये YDSC होता है, यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ पर दिस पार्ट, तो यहाँ पर अपने को कहीं पर मैक्सिमा आता है, ये y होता है, ये कैपिटल D होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d होती है. एंड दिस वन इज फॉर्मिंग एन एंगल राइट नाउ फॉर मी और थीटा. यहाँ से पाथ डिफरेंस बनाते हैं डेल्टा x, दैट इज नथिंग बट d sin थीटा. थीटा वेरी स्मॉल है तो sin थीटा विल बिकम फॉर मी tan थीटा. tan थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू y by your d. सो ये हो गया d into your y by your capital D is equals to your n into your lambda. Clear? n की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? n2 लेंगे, मिनिमम की जो रहेगा वही लेंगे ना, isn't it? तो y value will be equal to your, this will become for me capital D is given for me how much? 100 and n1 will be equal to how much for me beta? 3 into wavelength will be equal to 4000 into 10 to the power of minus 9 nanometer बोला है ना, divided by your 2 into 10 to the power of minus 3, small d is given as 2 mm into capital D is your 100 centimeter मतलब 1 meter. So simplify कर लीजिए, will be getting 0.006 meter. Direct to question है बेटा, so that is very important to be remembered. तो ये हो गया मेरे पास 6 mm. Very easy question, करने वाला लायक question है, directly formula based question है. Clear है? चलिए थर्टी 39 आप लोग ट्राई कर लीजिए. 41 कोई कर सकता है क्या? देखो जल्दी से बताइए. तो मोनोएटॉमिक गैस, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम लेफ्ट इज ओनली 1 minute. तो मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P and वॉल्यूम V is expanded adiabatically to a volume of 8V. Final pressure will be equal to how much? ये क्या लिखा सकते हैं? adiabatic process है ना बेटा, PV to the power of gamma is equals to constant. यानी P1 V1 to the power of gamma is equals to P1 P2 V2 to the power of gamma. कौन सा गैस है बेटा? मोनोएटॉमिक गैस है राइट नाउ फॉर मी. सो ये हो गया P, वॉल्यूम इज V, दिस इज योर 5/3, दैट इज इक्वल्स टू योर प्रेशर, दिस वन इज योर P डैश, वॉल्यूम इज राइट नाउ फॉर मी और 8 times of V to the power of your 5/3. सो P डैश निकालना है अपने को, P डैश विल बी इक्वल टू P, ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 to the power of 5/3, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 5/3, मतलब इसका कैलकुलेशन देख लो बेटा एक बार. P/32 आ रहा था किसी को, ठीक है आप लोग चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन, देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 44 कोई बोल सकता है जल्दी? डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैंने बोला था, बाहुबली का कॉन्सेप्ट भी बोला था टेरेस्ट्रियल के लिए. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के पास जब सूरज को देखते हैं या सन को देखते हैं या मून को देखते हैं तो आंख के पास जो लेंस रहता है वो छोटा रहता और ऑब्जेक्ट के पास जो रहता है वो बड़ा रहता. Isn't it? So astronomical telescope has larger aperture and which will have the high resolving power.